अब मैं अपने बच्चों को देखती हूँ हमेशा, whenever somebody asks me how do you manage everything with them, and I always say that if I can give birth to them, I can do anything. पता है आपको, मुझे लगता है लार्जर देन लाइफ जीने के लिए ना पैसों की जरूरत नहीं होती। मैं ना ऐसे जीती हूँ कि, और सच्ची में मैं ऐसे जीती हूँ, कल नहीं हुआ तो क्या होगा, आज ही है मेरे पास, मुझे आज ही जीना है। Hello everyone, this is Hensi from the CSR Journal. Today we have the pleasure of speaking with Harpreeth Suri, also known as Mom Wears Prada, a popular Instagram influencer who has made a name for herself in the world of motherhood and fashion. With over 168,000 followers on her Instagram page, Harpreeth has become a go-to source for moms who want to stay stylish while juggling the demands of motherhood. Harpreeth, welcome to the CSR Journal. Actually, let me just start on a very light note. So I am really taken with your tag, the hashtag, the name Mom Wears Prada. So are you like a fan of Devil Wears Prada? Is that how you came up with this name? इन रियल ये एक इतनी फनी स्टोरी है, इट हैज नो सिग्निफिकेंस, बट दिस इज द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन। Is it? एंड इसका बस सोचो, मैंने एक स्टोरी बना लेती हूँ, मुझे लग रहा है इसके लिए it should be Yeah. very interesting for people, but the real story is that I was at work. I used to be in a corporate job earlier, and I'd gone to Big Chill, and Big Okay. Chill has these big posters, which has different movie names. Mhm. And of course, I'm very fond of luxury. That's something that I enjoy a lot, and Okay. I value things a lot in terms of investing in different pieces. And when I was looking for my handle, I really tried a lot of combinations. मुझे ये पता था it has to be mom centric because that's something that I was aiming to do. I wanted to talk about motherhood only. Okay. And it has to be very fashionable also. तो मुझे mom fashion समझ नहीं आ रहा था कुछ, and then I saw this poster which says Devil Wears Prada. And I was like, oh wow, if Devil can wear Prada, mom can definitely wear. So let mom wear the Prada. So yeah, and then it became Mom Wears Prada. And that's it, and that's real. Like I was that's right then. That just means that my guess was correct. That's how for you the got closest. it. So journey started with this experience that I had, but I was struggling as a mother, and हार गई थी बहुत ज्यादा, थक गई थी, मुझे लग रहा था कि नहीं कर पाऊंगी अब, with two kids बहुत difficult हो गया था, that mom Okay. guilt, same story, we all Yeah. women, all moms, मेरी I भी वही know. story, I also had my struggle. And one day I just decided that I'm going to give it all up. I was really missing my daughter a lot. My daughter was very loving. My son was a little more quieter that way. Daughters, I think, very lovable. They need all of you. तो मुझे बहुत गिल्ट होने लग गया था कि अब ये ठीक नहीं है, आई वुड वांट टू बी अ स्टे होम मॉम। बट इन दैट टाइम ना, मैंने ब्लॉगिंग नहीं बोलूंगी, आई स्टार्टेड शेयरिंग माय लाइफ आउटसाइड। पैसे नहीं थे बस, और कुछ भी नहीं था, बट आई वाज एंजॉयिंग इट। कि मुझे हाउ पीपल कमेंट ऑन यू एंड यू लाइक इट, कि अच्छा सो Yeah. नाइस, फ्रेंड्स ही कर रहे हैं, आसपास के लोग कर रहे हैं, मजा आ रहा है, Hmm. इतना ही किया था। और मेरी प्रेगनेंसी बहुत पॉपुलर हुई थी बिकॉज आई आई डिड एवरीथिंग, आई थिंक। अब ये लोग शूट्स अब करते हैं, लोग बेबी बुक्स, फैंसी बर्थडे शावर्स, ये अब लोग करते हैं। मैं कर चुकी हूँ 10 साल पहले सब कुछ करके, क्रेजी शूट्स। आई हैड नॉट वन, नॉट टू, नॉट थ्री, बट 4 प्रेगनेंसी शूट्स बिकॉज मैं खुश नहीं थी अपने फोटोज से। एंड माई हस्बैंड नोज दैट अबाउट मी। मैं बहुत लार्जर देन लाइफ जीती हूँ। पता है आपको, मुझे लगता है लार्जर देन लाइफ जीने के लिए ना पैसों की जरूरत नहीं होती, आइडिया की जरूरत होती है। यू कैन डू अ शूट एट होम ऑल्सो। आपने किया जो किया, बट आई हैड दैट जेस्ट, कि मुझे ऐसा कुछ करना है। सो वो सब चल रहा था। और जब मैं व्हेन आई वाज इन द हॉस्पिटल, सो द डायरेक्टर ऑफ सीताराम, द हॉस्पिटल आई वाज इन, दे केम टू आस्क द सिस्टर, वो जो इंचार्ज होते, कि ये किसका बच्चा हो रहा है भाई, बिकॉज मेरे रूम के बाहर आई टुक स्पेशल मतलब आई एम प्रेग्नेंट 9 months, आई शुड गो टू द हॉस्पिटल टेक परमिशंस। मेरे रूम के बाहर एक बड़ा सा चांद था, उस बलून्स का, उस पे एक बच्चा था विद दैट वाटर ड्रिंकिंग दैट मिल्क। Yeah. एंड ये भी डिटेल्स, मतलब मैंने अपने हस्बैंड को बोला था करने के लिए, द मोमेंट ना बेबी कम्स आउट, फोटो खींचेगी, और फर्स्ट फोटो चाहिए मेरे रूम में आने से पहले, फोटो होनी चाहिए वहां पर, लोग आके बच्चे को देख लें पहले, बच्चा तो बाद में आता है। Hmm. लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये सब चीजें ना आर राइट फॉर इन्फ्लुएंसर। Okay. These all things make an influence. This I didn't know. I was doing it for fun. धीरे धीरे ना ये फॉर्मुलाइज होता गया। देन आई स्टार्टेड गेटिंग अ लॉट ऑफ कमेंट्स। फिर मुझे ऑनलाइन में बहुत कवर हुई। तब मुझे लगता था कि मैं तो पीआर से थी, तो आई थॉट दिस आर डिफरेंट थिंग्स, पीपल वांट टू कवर ऑल दिस, एंड आई वाज एंजॉयिंग द प्रोसेस। फिर धीरे धीरे समझ में आया, इस सबको एक शेप मिल गई कि ये Okay.
पेरेंटिंग इन्फ्लुएंसिंग में आता है। इसको मैंने एक नाम दे दिया, इसको दर्जा दे दिया है कि अच्छा ये इन्फ्लुएंसिंग है और मैं अब मॉम इन्फ्लुएंसिंग करने वाली हूँ। तो मेरी मॉमी इन्फ्लुएंसिंग में मैं इम्यूनिटी बिल्डिंग, डायपर पुटिंग नहीं मुझे नहीं आता था। मैं तो खुद फर्स्ट टाइम मॉम थी, मुझे तो आता ही नहीं था ये सब। सो आई केप्ट थिंकिंग कि व्हाट आई एम गोना डू? मेरी क्या नीश होगी एंड दैट्स व्हेन और मैं क्या सिखाऊँगी? क्योंकि मैं तो खुद ही नई मम्मी हूँ, मुझे तो खुद कुछ नहीं आता। बट मुझे एक चीज़ आती थी, वो है खुश रहना। Hmm. और मेरा माय सन आल्सो लाइक माय सन वाज़ व्हाट 6 दैट टाइम एंड हैप्पी बच्चे रेज़ करना, मुझे ये सब आता था। तो मुझे और ज़िंदगी लार्जर देन लाइफ कैसे जीनी है। तो मुझे लगा अब मैं मदर्स को ये सिखाऊँगी। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माय जर्नी। The challenge and the struggle, my son was lactose intolerant. My son couldn't drink my milk and I used to milk like a cow. Oh my God. Like I used to have a big jar of milk. I used to give twice in a day. Oh shit. But my son could not have it. And everybody judged me around me that अपने career पे focus करना है इसलिए बच्चे को दूध नहीं पिला. I've heard all shit possible. That didn't deter me. I was like, I know it in my heart. My How son do you can deal with that? How do you deal with those? Like, I mean, as an influencer, not just people around you, but आपको comments भी मिलते होंगे कि like you working so much all the time. तो आप कैसे like work life balance में भी problem होता होगा. So how do you deal with all of these things? यार मैं इस पे हम विस्तार में जाएँगे बट मैं इसका एक आंसर मैं सबको देती हूँ और वो है कि मैं अपने बच्चों को देखती हूँ हमेशा व्हेनेवर समबडी आस्क्स मी हाउ डू यू मैनेज एवरीथिंग विद देम एंड आई ऑलवेज से इफ आई कैन गिव बर्थ टू देम आई कैन डू I एनीथिंग। यार agree with you. मतलब That is so true. आई हैव गिवन बर्थ टू 2 ह्यूमंस जो अभी इस दुनिया में चल रहे हैं, जी रहे हैं, खा पी तो मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ और हर माँ every mother we have so much potential। आपको पता है I also went through my fair of disturbances because of my children because my son could not drink milk, my daughter was protein allergic। तो ये वाली ना चीजें किसी ने सुनी नहीं हुई थी। People just felt मैं दूध नहीं पिलाना चाहती because I am very focused on my career। Okay, that was their thinking, I don't care। my see for me आपकी लाइफ में ना आपके इनर सर्कल के कुछ लोग बड़े स्ट्रांग होने चाहिए। सो फॉर मी माय हस्बैंड, माय फादर एंड माय मदर इन लॉ, दे आर द पिलर्स ऑफ माय स्ट्रेंथ। I just spoke to these 3 people that I am struggling here। हाँ, मुझे नहीं पता था लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या होता है, बट मुझे पता कुछ प्रॉब्लम तो है, मुझे भी और बच्चे को भी है। We figured our way out, whoever had to say whatever didn't affect me, I did what I want to do। मेरे घर में आप नहीं डालते राशन यार आके, ये बात तो मैं सबको समझाती हूँ, कि अगर आप मुझे बोलते हो कि उसने मेरे बारे में ये बोला, तो आपको ये समझना पड़ेगा that person is not putting food in your house। You Yeah. need to row your own boat। Yeah, I really want a detailed answer on that कि आप कैसे करते हो work life balance और आपका तो काम ही ऐसा है कि you have to put everything into it because it's not like a 9 to 5 job कि चलो weekends को मैं कुछ काम नहीं करने वाली हूँ अब सब मैं कोई कॉल नहीं उठा रही हूँ मेरा कुछ काम नहीं है मैं यही because it's a full time thing, it's your own Yeah, baby, right? Like just like your 2 children, this is also your baby. So how do you do that? Like how do you make sure that you balance it out? देखो एक ना ये वर्क लाइफ बैलेंस के नाम की कोई चीज होती ही नहीं, देयर इज नो बैलेंस। ये हम अपने आप को मैंने इतने पॉडकास्ट सुने अपनी लाइफ में, मैंने इतनी टेड टॉक सुनी है इसके लिए, कोई बैलेंस नहीं है कुछ। और स्पेशली इन आवर काइंड ऑफ जॉब वी आर 24 आवर्स ऑनलाइन, आवर लाइफ इज लाइक अ लाइव फीड। तो इसके अंदर मैं वक्त चुरा लेती हूँ, मैं वक्त चुराती हूँ, मैं सोचती हूँ कि मैं अपने आप को ना, सो आई ऑलवेज वर्क ऑन अ स्केड्यूल, Okay. आई प्रायोरिटाइज। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये इतनी बेसिक चीजें हैं लाइफ की, जिस दिन आप फिक्र कर लोगे ना आपकी लाइफ सॉर्ट हो जाएगी। मेरी तो हो गई। तो मैं पूरे हफ्ते में तो आई मेक अ प्लान फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स। एक्चुअली मेरा एक आइडल प्लान बनता है, ईयर कैलेंडर, 2 मंथ्स कैलेंडर, वीकली कैलेंडर, डेली कैलेंडर। आई लर्न्ड समवेयर, जय शेट्टी का एक कोट था, प्रिपेयर फेलिंग टू प्रिपेयर इज प्रिपेयरिंग टू फेल। सो आई प्रिपेयर एंड प्लान। आई टेल माय किड्स, माय टीम, एवरीबॉडी कि दिन के 10 मिनट आपको सिर्फ प्लान करना है। सो आई प्लान टुडे, आई हैड अ प्लान, एवरी डे आई हैव अ प्लान, आई डू दिस। इसके अंदर बच्चों का भी क्लास का आ गया, एक क्लास में साथ बैठ जाती हूँ, चलो इसमें दीदी बैठ जाएंगी, कोई बात नहीं। अब मैं रात को आयत को ना एक स्टोरी बुक सुना दूंगी। अब 2 बच्चे हैं तो अरहान को बुरा ना लगे, तो यू नो व्हाट आई डू, हाउ आई स्पेंड टाइम विद माय किड्स, समथिंग एज सिली एज आई डू अ फेशियल फॉर देम। It's a small thing। I'll call him, I just come, I'll do your facial, Arhan। So I'll just put some cream and I'll keep talking to him। You have to take out time, Yeah. you have to manage that time। Okay, so what is your success mantra of parenting? Like, what is
your success? How do you go about it? सो अकॉर्डिंग टू मी जो मेरे लिए वर्क करा है, पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था Mhm. कि व्हाई इज ही बिहेविंग, एंड आई हैव नो क्वाल्म्स इन एक्सेप्टिंग इट। मैं फर्स्ट टाइम मदर हूँ। मैं पिछले जन्म में शायद मदर होंगी, मुझे पता नहीं है। और इस जन्म में मैंने कोई क्लासेस नहीं ली हैं। Mhm. तो मेरे को तो आती ही नहीं पेरेंटिंग, मैं सीख रही हूँ। तो मैं अपने बच्चों से बहुत सीखती हूँ। मैं उनको हमेशा बोलती हूँ सॉरी, जब मैं कुछ गूफ अप कर देती हूँ या मुझे उनकी बात समझ नहीं आती। आई टेल माय किड्स बोथ ऑफ देम वेरी वेरी, आई मेक देम सिट डाउन एंड टेल देम दैट आई माइट हैव गूफ्ड अप। मैं फर्स्ट टाइम पेरेंट बनी हूँ बेटा, मुझे पेरेंट बनना नहीं आता। आपकी मुझसे एक्सपेक्टेशन क्या है मुझे बता दो। इट्स वेरी ईजी। तो ही विल, माय सन टॉक्स, ही टेल्स मी अ लॉट ऑफ थिंग्स। Once I scolded my daughter, and she was crying, and I really scolded her that you're always crying, and this is not nice. Wherever I take you, you cry. One day I was crying, abhi recently, and she comes to me and she tells me, she was calming me down, quiet, quiet. Then again, one day she was crying. I scolded her. You know what she told me? She said, "When I cry, you scold me. When you cry, I love you." My heart melted. My heart melted. My heart She's broke. 6 years old. She's Yeah. 6. And I told her, I said, बच्चे, पहले तो मुझे बहुत बुरा लगा. Then I explained her that no, it's not that mama is having a bad day. And then I told her that बेटा आप गलत बात के लिए रो रहे थे, इसलिए मम्मा ने आपको गुस्सा किया है। आप इसलिए रो रहे थे, जो भी रीजन था, आपको टॉफी नहीं मिली, चॉकलेट नहीं मिला, मम्मा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के लिए रो रही थी। या मम्मा हैड अ मेल्ट डाउन, या आई थिंक हैड अ मेल्ट डाउन विद माय सन, एंड आई क्राई। मैं बड़े बड़े, और जब मैं रोती हूँ तो मैं शौक से भी रोती भी हूँ फिर, बिकॉज यू नीड टू टेक इट आउट। यू Yeah. कैन नॉट जस्ट कीप होल्डिंग, इट्स ओके टू क्राई। आई क्राई इफ आई फील ओवरवेल्म्ड, आई क्राई इट आउट। सो आई वाज टेलिंग हर, एंड देन शी अंडरस्टूड। वरना वो लाइफ लॉन्ग यही इंप्रेशन लेके चलती कि रोने पर डांटना है। Hmm. That's how kids, they understand this language. So I had to explain her. We learn a lot from our kids. I learn a lot from my kids. What is your plan for Mother's Day this year? मैं अपना मदर से 1 महीने पहले शुरू करती हूँ, मिनिमम। बिकॉज़ आई नो, मेरा बर्थडे आता है एग्ज़ैक्टली उन्हीं दिनों में। मैं खुद ही इतनी आई वांट टू सेलिब्रेट माय सेल्फ। उसके अंदर मैं ना मम्मी को नाराज़ करना चाहती हूँ, ना मॉम इन लॉ को, ना किसी भी अपनी फ्रेंड को, एंड आई लव सेलिब्रेटिंग ओकेजन्स। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हर छोटी चीज़ को सेलिब्रेट करती हूँ। मैं ना ऐसे जीती हूँ कि, और सच्ची में मैं ऐसे जीती हूँ। कल नहीं हुआ तो क्या होगा? Hmm. आज ही है मेरे पास, मुझे आज ही जीना है। एंड माय हस्बैंड समटाइम्स टेल्स मी दैट इवन एट 41, quite a lot of enthusiasm. I said, yes. What's stopping? So the other day I was sitting with someone very old. So I was sitting with them, and that person told me that, oh, you're celebrating your 41st also. I was like, yeah. So I celebrate my birthday every year, and like big pomp and show. मुझे अच्छा लगता है यार. I celebrate Yeah. myself. So I'm 64. Shall I also celebrate my birthday? I said, of course. Why not? Celebrate. I said, you're happy in your life? I'm happy in my life. So for Mother's Day, what I do is मैं 1 महीने पहले शुरू होती हूँ। मैं आइडेंटिफाई करती हूँ मदर्स को, लाइक चाहे वो मेरी अपनी फैमिली हो, मेरे फ्रेंड्स हो, आई आइडेंटिफाई देम एंड आई ट्राई एंड प्लान समथिंग फॉर देम। सो दिस ईयर आल्सो आई एम सेंडिंग, ये तो मैं हर साल करती हूँ। आई आइडेंटिफाई लाइक 40 women, and I send them out for like a pampering session at wherever I work with, whoever I'm tying up with that time. तो मैं ये हमेशा करती हूँ, हमेशा। एंड दिस ईयर मैं कुछ और भी बड़ा इंटरेस्टिंग कर रही हूँ ना। आई वर्क विद दिस ब्रांड। मैं ना होम ग्रोन ब्रांड से बहुत काम करती हूँ। सो विद वन ऑफ देम, दे डू हेयर पैक्स, Mhm. organic hair packs for hair, and they are मेरे पूरे कोड में बाल ठीक कर दिए उन्होंने। So I have tied up with them to go to some 20 women who I know, who need that pampering. So I'm sending them to the house. There's a lot that I'm doing. वो मुझे बहुत मजा आता है, और ये मैं पूरे 1 महीना लेती हूँ उसके लिए, ताकि हम सब लोग अपनी डेट्स के हिसाब से they Right. can come out and spend time with, and I do it with 1+1. So mom and That's so mom-in-law, like that. sweet. That's I so think a sweet. lot. Tell me about a cause that is really close to your heart. Like if you had $1 million on your hand, what would be one cause in which you would want to invest and work hard and give your time as well as the money that you have? Oh my God, millions. Then it's going to be education for kids. That's Okay. one cause very close to my heart. My father again taught me that बेटा किसी को ना इतना इक्विप कर दो कि वो भीख ना मांगे। तो Right. मुझे ये बात बहुत टच कर गई बचपन से। तो मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि मैं किसी भी वे में ना एजुकेशन में हेल्प कर दूँ।
COVID हुआ था, so we started doing crowdfunding and we started giving, tabs to kids. Mhm. I took money from others only. We put it all together. So I Okay. thought 1 month, one tab, but it did so well, the campaign, that we had, I think, 4 tabs in 1 month, for 4 kids, and they were so happy they could study. COVID was very hard hitting, Yeah. but so good to talk to you. Yeah, such a Same nice here. Same conversation. here.